Alright, so previously we talked about what was ionization energy and what were its patterns of ionization energy across a period and across the group. Now we'll talk about the different drops. तो जो different drops थे वो क्यों हो रहे हैं यहाँ पे and why, what are the reasons behind them? क्यों किसी की ionization किसी से ज़्यादा है? And we're going to be discussing different dips that are asked in the paper as well. For example, अगर हम period number 3 को देखें, the drop between beryllium and boron और मैग्नीशियम और एल के दरमियान जो ड्रॉप हो रहा है। अब ये देखिए, here we have, ये तो आपका पीरियड वो हो गया ना, ठीक है, ये आपका पीरियड 1 हो गया। जैसे ही आपका पीरियड 2 आया, पीरियड 2 में ये पीरियड 2 है और ये पीरियड 3 है, ठीक है। पहले तो हम यहाँ लिखते हैं पीरियड 2, पीरियड 3। अब पीरियड 2 में ये एक जगह ये डिप आया, ये बेरिलियम से बोरॉन में एकदम से ये जो डिप आया, व्हाट इज द रीजन फॉर इट एंड व्हाट इज द रीजन for the decrease in the first ionization energy? Now there is a slight decrease in the first ionization energy between beryllium boron and magnesium aluminium. Why is it? Because this is because the fifth electron in the boron is located in a 2p subshell, which is slightly further away from the nucleus, and the outer electron in the boron is shielded by 1s and 2s electrons as well. अब अगर आप बेरिलियम के देखें which has 4 electrons और अगर आप बोरॉन को देखें which has 5 electrons, बेरिलियम doesn't have a p orbital but boron has a b orbital और इसकी जरा हाई एनर्जेटिक का मतलब ये थोड़ा सा दूर है न्यूक्लियस से, and the further away it is from the nucleus, lesser would be the ionization energy needed. For example, अगर मैं Mg और Al को डिस्कस करूं, now the decrease in the first ionization energy between magnesium and aluminium has the same reason as well, except that everything is happening at a third energy level. यहाँ पे क्या फर्क है? Again you can see कि 3s तक यहाँ खत्म हो रहा है, but here we have another orbital in the third shell. Over here, only s orbital is present in the third shell. Over here, s and p, both orbitals are present in the third shell. Again, p orbitals are high energetic. They are further away from the nucleus. And what would happen now? Further away from the nucleus, higher the energy of the orbital, lesser would be the ionization energy required for aluminium. तो ये देख सकते हैं मैग्नीशियम को ज्यादा चाहिए एनर्जी, aluminium को कम चाहिए, because aluminium has a p orbital which is high energetic and further away from the nucleus. If we talk about the draw between NO and P and S, ये भी बहुत दफा आ चुके हैं. There is a slight decrease in the first ionization energy between nitrogen, oxygen and phosphorus sulfur. अब जब भी क्वेश्चन है, you can use my notes, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस सल्फर, उसके बाद पेपर में ये भी पूछा गया बेरिलियम बोरॉन और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, भी चारों डिप्स के सवाल आ चुके हैं और यही वाले रिपीट होते हैं। इसके अलावा और कोई डिप्स नहीं है किसी भी आयनाइजेशन एनर्जी में, तो कुछ तो देखे दिखाए क्वेश्चन आ जाते हैं। What's the reason behind it? अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं, now this is because the electron being removed in oxygen is from an orbital which contains a pair of electrons, and the extra repulsion between the pair of electrons results in less energy needed to remove the electron, known as the spin pair repulsion. अब यहाँ पे नाइट्रोजन को देखें which has 7 electrons और ऑक्सीजन को देखें which has 8 electrons. यहाँ पे इसका 2p3 है। 2p3 का मतलब है कि एक x में, एक y में, एक z में। यहाँ पे 2p4 है। 2p4 का क्या मतलब है? 1, 2 और 3, और ये 4, ये जो एक बॉक्स के अंदर ना दो इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे ऑक्सीजन में। एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन, अब जब दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, देयर इज ऑलवेज रिपल्शन व्हेन देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेम बॉक्स। सेम ऑर्बिटल में जब दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, देयर वुड बी स्पिन पेयर रिपल्शन। रिमेंबर, whenever there is repulsion, higher the repulsion, lower would be the ionization energy, and it would become more easy to remove the electron from oxygen rather than nitrogen. अगर मैं phosphorus और sulfur वाले dip की बात करूं, now the decrease in the first ionization energy between phosphorus and sulfur has the same reason, except that everything is happening at the third energy level. Here you can see कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, again 3p3 है और इधर क्या है 3p4। ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक पेड़ है, तो अगेन पेड़ पेड़ रिपल्शन की वजह से भी सेम रीजन फॉर द डिप इन सल्फर। सो सल्फर में लेस आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू द स्पिन पेयर रिपल्शन, एंड phosphorus has a higher ionization energy than sulfur due to no spin pair repulsion.